Assalamu alaikum. Welcome to Shahbaz Tariq Jammu YouTube channel. Today I make this video in English as well as Urdu because my foreign country viewers they strongly ask me, Mr. Shahbaz, make a video in English because they understand English language. So today I decide I make this video in English as well as Urdu because I have many viewers in Pakistan as well as in India. They understand Urdu language. So let's start today topic. Our topic is and business idea is making carrot oil. Yes, carrot oil is a very beneficial for our skin as well as this recipe is a very good for our hair. So coming season is a winter season. So this recipe is a very good for those people who make this product for business purpose as well as they make for self-care product. So I strongly recommend this business is a very good business. No need to purchase a very big machinery as well as very expensive equipment. So I teach you this recipe with household product like just you use your items, those items available at your kitchen. So this recipe is very easy. As well as this recipe is very beneficial and very good for those people who is a small businessman or small entrepreneurs. So they start this recipe from very small investment and they built a very big brand. दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ गाजर का ऑयल कैसे बनाया जाता है। सर्दी का सीजन आ रहा है जिसकी वजह से आपको स्किन से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जरूरत पेश आने वाली है और ये सेल्फ केयर और एज वेल एज बिजनेस के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त हम अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज की प्रैक्टिकल वीडियो में मैं तमाम आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा जो इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट ingredient and then we talk about apparatus. The main ingredient of this recipe is the carrot, coconut oil, vitamin E oil and fragrance oil. Here we use fragrance oil and we use essential oil, both is okay. Let's talk about apparatus. In apparatus we use this spoon and as well as knife, this bowl for cooking purpose, this kind of the jar for oil, and this is a weighing scale and piece of cloth for filtration purpose, and as well as we use this two small beaker and one jug. This is a 2 bottle amber glass bottle for containing oil. This is a cutter for cutting the carrot in small pieces. This is a plate and this is a coffee beater and this is a spatula, right? अभी हम बात करते हैं अज्जा की। अज्जा में हमें गाजर चाहिए, विटामिन ई चाहिए, कोकोनट ऑयल यूज करें हम यहाँ पे और इसके साथ एसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस ऑयल यूज होगा। ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो इसमें ये चम्मच चाहिए, इस तरह की हमें छुरी चाहिए जिसे नाइफ कहते हैं, ये हमें एक सॉसपैन चाहिए, खाली शीशे की इस तरह के जार चाहिए, वेजिंग स्केल चाहिए, पीस ऑफ क्लोथ चाहिए, ये हमें मिक्सिंग के लिए कॉफ़ी बीटर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, इस तरह के 2 हमें बीकर चाहिए, जग चाहिए और ये हमें ऑयल को कंटेन करने के लिए एम्बर ग्लास की बोतल चाहिए और ये प्लेट चाहिए, साथ में ही कटर चाहिए। इसको धो के अच्छी तरह खुश्क करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको धो के खुश्क किया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कद्दूकस यानी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। Firstly, we wash carrot and dry in a cool place under the air, and then we cut in a small pieces. Then we start a practical how to make carrot oil.
firstly we cut this carrot into like this small pieces, you see like this, right? This is the final shape of the carrot. Now we take 100 gram of carrot and 100 gram of coconut oil, because we use a small recipe, small quantity, because we have need small quantity during a practical, and if you make a big quantity you take a big amount of ingredient. So firstly we put a plate on the weighing scale and tear the weight of the this plate. Now we put all the carrot in the plate and टेक अ वेट. सबसे पहले हम गाजर को डालेंगे प्लेट के अंदर, वज़न करेंगे 100 ग्राम हमें गाजर चाहिए. दिस इज़ ऑलमोस्ट 100 ग्राम. Okay, right. Now we take 100 gram of coconut oil on it. This is a 50 ml beaker, and again 50 ml, because we have need 100. If oil is a, if you think oil is a small, then you add more oil, right? So I add a carrot on it. मैं इसमें गाजर को ऐड करूँगा और देखूँगा कि ये गाजर अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट में नज़र आई तो फिर मैं ऑयल भी ऐड करूँगा. So you see, this is a condition. This time oil is less, carrot is more, so we add some quantity of more oil. So we add 50 ml again and 50 ml more, because this time carrot is 100 gram and oil is a 200 gram. इस वक्त गाजर की ये हालत है, गाजर हमारे पास ज़्यादा लग रही है और ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने ऑयल जो है 200 ग्राम लिया है कोकोनट का, और जो गाजर है वो 100 ग्राम ली है. अभी हम इसको चूल्हे के ऊपर पकाएंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ. लेट्स स्टार्ट कुकिंग ऑफ दिस मटेरियल एट फायर, बिकॉज आई हैव नो. Let's cook this material on fire. Firstly open the fire and then put this saucepan on it. सबसे पहले आग को जलाना है, उसके बाद इस सॉसपैन को ऊपर रखना है. अभी इसको अच्छी तरह फ्राई होने देना है. When it fried, carrot in oil and then put off, and we stain this oil material and put fragrance and vitamin E and save in a amber glass bottle. We fry carrot with oil, coconut oil. इस टाइम गाजर जो है कोकोनट ऑयल के अंदर फ्राई हो रही है, और जब ये मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएगी उसके बाद फिर इसको ठंडा करेंगे. ठंडा करने के बाद फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद विटामिन ई ऐड करेंगे, और दैट्स ऑल. This time this fry completely, all the carrot in brown color and oil is a different color, because this is a coconut oil. This time color is changed. So अभी हम क्या करेंगे, ये खाली जार लेंगे और इसके अंदर हम गाजर, ये जो इसके अंदर फ्राई हो चुकी है, फ्राई इतनी हुई है कि गाजर जो है इटसेल्फ ब्राउन हो चुकी है. ठीक है, ब्राउन होने का मतलब है कि ऑयल के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट था वो सारा ड्राई हो चुका है. This time carrot is color is a brown, because all water inside the carrot and oil, they are dried out. So the shelf life of this oil is a very long, like 5 to 10 years. Let's start to filtration process. Firstly we add all oil in this jar. Carefully, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने इसको फ़िल्टर करना है. ठीक है, आस्ता आस्ता फ़िल्टर करना है, बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ़िल्टर सही नहीं करेंगे तो सारे के सारे जो इसके जो कंटेंट हैं, जो गाजर के मट्टी और उसके जो जले हुए पार्ट हैं, वो भी इसके अंदर चले जाएंगे. इसलिए आपने इससे बचना है. ठीक है, और इस तरह से आपने इसको डालते जाना है. ठीक है, राइट. और आप कंपैरेटिवली देख भी सकते हैं कि पुट ऑल द ऑयल इन द जार. तमाम का तमाम ऑयल जो है वो जार में डालते जाना है आपने.
कोशिश करनी है ये वेस्ट ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं जो कैरेट हैं वो इस फॉर्म में आ चुकी हैं। दिस टाइम यू सी द कैरेट ऑन दिस शेप and all the oil we put inside the jar. Now we open the filter. You know, this is a piece of cloth, और ये कपड़े का जो टुकड़ा है इसको हटा लेना है आपने, बड़े एहतियात के साथ इसको साइड पे करना है, ठीक है। और ये इस वक्त जो फ्रेश कैरेट ऑयल है वो आपके पास आ चुका है। The difference, this is a carrot oil and this is a coconut oil, right? If your product is like look like this, then is okay. If you like your color is like this coconut oil, then you think this is not good product, right? Now we take I take a 25 ml of carrot oil. Now I put vitamin E oil, 2 ml, at least 2 ml, right? Okay, after adding this, you add few drop of fragrance. Just 2 drop of fragrance. Then you mix clearly, right? इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल लेना है, इसमें विटामिन ई डालना है 2 ml 25 ml के अंदर, और 2 ड्रॉप खुशबू के डालने हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ये इस वक्त फाइनल प्रोडक्ट बन चुकी है, और इसके ऊपर ये लगाएंगे, और ये एम्बर ग्लास बॉटल लेंगे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, कैप हटाएंगे, और इसके अंदर ये जो हमारा ऑयल तैयार हुआ है इसको ऐड करेंगे, राइट। जी, इसके ऊपर कैप लगाएंगे, और ये देखें बड़ी ही नाइस प्रोडक्ट इस वक्त बन के तैयार है। आप इसको हेयर और स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टिकर लगाएं, इसके ऊपर छोटा सा पैकेट लगाएं, डब्बा, और इसके बाद इसको मार्केट कर दें। तो ये सारी की सारी रेसिपी थी। सो दिस इज़ टुडे आवर ऑल रेसिपी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप दिल खोल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं मज़ीद इस रेसिपी के बारे में जानने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बिज़नेस कितने से स्टार्ट होता है, तो ये बिज़नेस जो है अंडर दी 50,000 आप स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो हाउ मच मनी वी नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, सो यू नीड हैव 50,000 Pakistani rupees and start this business where it's low investment. So that's all today recipe. If you have any questions, you drop comment on the comment section. आज की रेसिपी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।